फ्रेंड्स, आज मैं अपने एक केस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा हो और उसके यूरिन में पस सेल्स अधिक मात्रा में प्रेजेंट हों तथा जांच करने के बाद सब जांच जैसे टाइफाइड, डेंगू फीवर, मलेरियल फीवर और अदर टेस्ट जो फीवर प्रोफाइल होता है नॉर्मल हो, तो उसको क्या बीमारी हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 1-2 महीना पहले एक पेशेंट आया जिसका नाम था अभिषेक और उसकी उम्र है 35 इयर्स ओल्ड मेल। वह व्यक्ति कंप्लेन किया कि उसको 4-5 दिन से ठंडी लगकर बुखार आ रहा है और डॉक्टर साहब आप मुझे चेक करके बताइए क्या करना चाहिए। जब मैंने पेशेंट को अपने क्लिनिक में बुलाया तो उसका कंप्लेन और हिस्ट्री लेने के बाद पता लगा कि उस व्यक्ति को ठंडी लगकर बुखार करीब 10 दिन से आ रहा है। बीच बीच में वह डोलो टैबलेट लेता है, उसको थोड़ा बहुत आराम हो जाता है और फिर उसको बुखार उसी तरह आता है। मैं हिस्ट्री, कंप्लेन और एग्जामिनेशन पेशेंट का करने के बाद पाया कि उसके यूरिन में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसने बताया था कि उसके यूरिन में थोड़ा बर्निंग सेंसेशन कभी कभी महसूस होता है। मैंने उसको एडवाइस किया ऑल फीवर प्रोफाइल, जिसके अंदर सीबीसी, एसजीपीटी, मलेरियल पैरासाइट, एंटेरिक फीवर, डेंगू, ये सब आते हैं रूटीनली। और उसके बाद यूरिन, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक रिपोर्ट आने के बाद पता लगा कि उसके यूरिन में करीब करीब 100 से अधिक पस सेल्स प्रेजेंट हैं, जो कि अत्यधिक हैं और यह इंडिकेट करता है कि अभिषेक के यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। On the basis of that report, I started treatment blindly without going for culture and sensitivity test. That having hope he will be relieved by this routine treatment. I gave him antibiotics like UTB 400 milligram या नॉरफ्लॉक्स टैबलेट, सिटाल सिरप और पैरासीटामॉल टैबलेट and certain antibiotics. He got relieved after this treatment, but as soon as he stopped the treatment, after 5 days, he again started having bouts of temperature. The same problem he started, and he started losing weights also. Again he complained the same thing. Then I called for re-examination and again taking the history of the patient. Once I took the history of the patient and I examined again, then I advised him culture of the urine and sensitivity test. And meanwhile, I started the previous treatment for temporary relief. Now, after 5-7 days, once the culture report came, I was surprised to note that although pus cells were present in the urine of the patient, which indicated that there is 100% infection in the urine, there must be presence of some bacteria in the urine which must come in the culture and sensitivity. But it was surprised to know that the culture report for the bacteria was negative, means no bacteria was cultured. Immediately I suspected that bacteria is 100% present, but it is some specific type of bacteria which has not come
in the culture. This is possible only for the Mycobacterium tuberculosis, which takes a lot of time for the culture, and that is near about 1 month. So the culture report has come to be negative. So I suspected that this infection may be due to Mycobacterium tuberculosis. So there must be tubercular infection in the body of this patient, yani Mr. Abhishek. I advised him some further investigation like X-ray chest PAView and CT chest, which revealed that this gentleman has got the active infection of the tuberculosis, which was revealed by the chest X-ray PAView and CT chest. After that, his diagnosis was confirmed that the infection in the urine had taken place due to the Mycobacterium tuberculosis. He was treated on the basis of pulmonary coughs with urinary tract infection due to Mycobacterium tuberculosis. Anti-cox treatment was given to this fellow, and he uh, just did very well and recovered very nicely. His weight was improved, his symptoms disappeared, and he completed the treatment for continuously 9 months, and he becomes absolutely fine. The, the message which this patient gives to all of us, that if in a patient where the pus cells are present in the urine in abundant and he is having fever for a long time, but if the culture of the urine comes negative, the only disease which we should keep in our mind is nothing but pulmonary tuberculosis or tuberculosis somewhere in the body of the patient, which has again infected the urine also. माने कहीं न कहीं उनके शरीर में टीबी का संक्रमण है, जो कि उनके यूरिनरी ट्रैक्ट को भी इन्फेक्ट कर चुका है. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.